In this video, we'll study random variable and probability distributions. Now we already know once we conduct a random experiment, we get a set of all possible outcomes and we call this set as S, and this set is called as sample space. Say for example, we toss 3 coins. Now if we toss 3 coins, then for each coin we have 2 choices, either head or tail. So it will be 2 into 2 into 2, and that is total 8 outcomes. So if we write the sample space, this sample space will be HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTHN, TTNT. So these are all possible outcomes when we toss 3 coins. And if we take another example, suppose we roll a pair of dice. Now, if we roll a pair of dice, we have 6 into 6, 36 choices. Now in this case, this sample space will contain 36 sample points, and they are 1, 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1, 2, 2, up to 2, 6, and 6, 1, 6, 2, up to 6, 6. So generally speaking, if we have discrete sample space with finite values, say this S, which contains sample points x1, x2 up to xn, then this random variable x, it is a function defined from S to R, and this function, it maps sample points with some real number. So basically, this term random variable, it is a misnomer because it is not a variable, it is actually a function. So a random variable is actually a function which associates sample points to some real number. Now say for example, if we consider our first random experiment and say this random experiment is E1, then for E1, we are tossing 3 coins and we are having these 8 possible outcomes. In this experiment, I can define a function x, and we define this x as number of heads. Now since we are tossing 3 coins, it can have either 0 head, 1 head, 2 head or 3 heads. So in this case, this function x, which we call random variable, will take 4 values. So this x, it can be 0, which is the case of no head. X could be 1, x could be 2, or x could be 3. Now when x is 0, it means from these 3 coins, we do not get any head. So this value of random variable, it corresponds to this outcome. So it corresponds to outcome TTNT. Now x is 1, that means one of them is head. Now one head, it is this HTT, THT and TTH. So this x equal to 1, it corresponds to these 3 points, HTT, THT and TTH. Now when we say x equals to, we'll have 2 heads. So this one and this one. So again, it will correspond to 3 sample points. So this is HHT, HTH and THH. And finally we have x equals 3. X equals 3 means 3 heads. So all 3 heads is this case. This is H, H and H. So basically this function x, what it has done is, it has mapped sample points with some real numbers.
And this is how we define a random variable. Now for the same experiment, we can define another random variable, which is y. And suppose y is mod of difference between number of heads and number of tails. Now for this case, what are the possible values of y? Now in this case, y, it cannot be 0 because number of heads, it cannot be equal to number of tail. So y obviously is going to start with 1. Now it cannot take the value 2 because 2 has to be 3 minus 1 and 3 minus 1 is not possible. Or it can have this value 3. So in this case, this random variable y, it can take only two values 1 and 3. Now y equals 1, it corresponds to 2 heads, 1 tail or 1 head, 2 tails. So it will be this HHT, HTH, HTT, THH, THT and TTH. And if we say y equals 3, it will correspond to all 3 heads or all 3 tails. So it will be this HHH and TT and T. So this is how we define a random variable. So basically a random variable is a function which maps sample points with real numbers. Now if we take this second random experiment, say E2, then here we have rolled a pair of dice. Now in this random experiment, one of the random variable we can define is sum of numbers on upper faces. Sum of numbers on upper faces. Now, what are the possible values for this random variable in this case? Now, minimum sum, it will be 2. And then it will be 3, 4, 5. And maximum sum is 12. So in this case, random variable x, it can take the value from 2 to 12. Another random variable that we can define in this case is, say, this y. And this y, it corresponds to number of odd numbers. Now in any throw, either we can have both even or one even, one odd, or it will be both odd. So in this case, this random variable y, it can take values 0, 1 and 2. Now this is very basic introduction of random variables, just to have a feel of what random variables are. Now random variables satisfy one more condition, and that condition is sum of probabilities of values of all the random variable, it must be equal to 1. So if we take probability of all the random variables and we add them, then that sum, it must be equated to 1. Now once we have a random experiment and we have defined a random variable, what we can do is we can always create a table writing values of random variable and their corresponding probabilities. Say for example, suppose we take this random experiment even, which is tossing 3 coins. Now let us take this random variable x. Now in this case, this x represents number of heads. Now x can take 4 values 0, 1, 2 and 3. So what we'll do is we'll draw this table. Here we're going to write random variable x and it can take 4 values 0, 1, 2 and 3. And here we're going to write their corresponding probabilities. Now what is the probability of x equals 0? So we'll get x equal to 0 when we have TT and T. Now what is the probability of getting TT and T? So in this case, favorable outcome is 1 and total outcomes is 8. So this probability is 1 by 8. Now what about x equal to 1? For x equal to 1, we have 3 favorable outcomes. So it will be this 3 by 8. For 2 also, it will be 3 by 8. And for 3 heads, it will again be 1 by 8. Now if we write sum of all probabilities, it will be 1 by 8 plus 3 by 8 plus 3 by 8 plus
1 by 8, which is 1. Now this table is called as probability distribution of random variable x. And the same way we can find probability distribution for this y. So we have y and py. Now y can take two values, 1 and 3. Now probability of getting 1, it is 6 by 8, and probability of getting y equals 3 is 2 by 8, and again this sum of all probabilities is 1. So this is how we define a probability distribution. So for any random experiment, we'll define a random variable, and for that random variable we'll create this table with x and px, and we're going to write values of random variable with their corresponding probabilities. Say x1, x2, x3 up to xn, and their probabilities are px1, px2, px3 up to pxn. अब इस क्वेश्चन में ये कहता है एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी रेंज में 3 वैल्यूज हैं, तो x आपके 3 वैल्यूज दे सकता है, 0, 1 और 2, और इसने दिया है कि इनका जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हैं 3k क्यूब px equal to 1 के लिए, 4k माइनस 10k स्क्वायर, और x equal to 2 के लिए 5k माइनस 1. अब हमको पता है अगर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आपका 1 होगा. तो अगर सबको ऐड कर देते हैं तो ये जो है 3k क्यूब माइनस 10k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5k 9k माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गया, 3k क्यूब माइनस 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 2 इक्वल्स 0. अब इसमें k का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 2, 12 माइनस 12, 0. तो इसका एक रूट k माइनस 1 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 7k स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 7k और प्लस 2k माइनस 2 इक्वल 0. तो ये हो गया 3k स्क्वायर k माइनस 1 माइनस 7k k माइनस 1 प्लस 2 k माइनस 1 इक्वल 0. तो ये हो गया आपका k माइनस 1 3k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 2 इक्वल्स 0. अब अगर ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं तो ये है k माइनस 1, ये है 3k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इक्वल्स 0. तो यहां से k की 3 वैल्यूज आ गई, या तो k 1 है या 2 है या 1 by 3 है. अब हमको पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए. तो 1 और 2 लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता. लेकिन अगर 1 by 3 लेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटा, 4 by 3 माइनस 10 by 9, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है. तो यहां से हमारे पास एक ही वैल्यू आएगा, k का वैल्यू होना चाहिए आपका 1 by 3, जो कि है आपका ऑप्शन 3. अब यहां कहता है कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी रेंज 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, और इनकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज है px equal to k, ये है 3 to the power ck अपॉन फैक्टोरियल k. तो यहां पे c का वैल्यू निकालो. तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ये 1 के बराबर होता है. तो इसका मतलब ये जो समेशन है k वेरीज फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट 3 to the power ck अपॉन फैक्टोरियल k, ये 1 के बराबर होना चाहिए. अब ये क्या है, ये है 3 to the power c अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 to the power c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 से लेके इनफाइनाइट तक. अब इसमें 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये 2 हो जाएगा.
अब ये जो आपका एक्सपेंशन ये है e टू द पावर x का एक्सपेंशन, जहां पे x 3 टू द पावर c है, तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर 3 टू द पावर c, ये बराबर है 2 के, तो यानी कि 3 टू द पावर c बराबर है log 2 के, और c बराबर है log टू द बेस 3 log 2 के। तो यहाँ पे c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा log टू द बेस 3 log 2, एंड दैट्स योर ऑप्शन 1। अब ये क्वेश्चन में पूछता है कि अगर रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है और इसका प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k इज k प्लस 1a अपॉन 3 टू द पावर k फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या होगा हमको बताना है। तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ये बराबर होता है 1k। अगर k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन 3 टू द पावर 0, k का वैल्यू 1 पुट किया, ये हो जाएगा 2a अपॉन 3 टू द पावर 1 प्लस 3a अपॉन 3 स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक, और ये 1 के बराबर है। अब ये सीरीज को एक बार और लिखते हैं, लेकिन एक टर्म छोड़ के और इसके कॉमन रेशियो 1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a/3 हो जाएगा, ये 2a/3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका 1/3। अब सेकंड सीरीज को फर्स्ट सीरीज में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a, ये कितना a/3, ये कितना a/3 स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक, और ये कितना 1 माइनस 1/3 हो गया आपका 2/3। अब ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना a अपॉन 1 माइनस r, तो ये जो a अपॉन 1 माइनस 1/3, और ये बराबर है आपका 2/3 के। तो यहां से जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 4/9, जो कि है ऑप्शन 2। नाउ वंस वी हैव डिफाइंड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, we can find mean and variance of a random variable. So the first thing that we can define is its mean or average value, or we can say mathematical expectation of a random variable. Mathematical expectation of random variable. Now basically we'll write this mean as mu or ex, which is expectation of this random variable x. Now expectation of this random variable x is this summation xi into pxi over all I. So all we need to do is we just need to multiply every random variable with its corresponding probability, and then we'll add them all up to get mean or expected value of a random variable. And the second thing that we'll study is variance of a random variable. Now, variance of random variable, we can write it as sigma x square, or simply variance of x, and variance of x is actually expectation of x minus mu square. So if mu is mean of random variable, then its variance is expectation of x minus mu square, which is basically this summation xi minus mu square into pxi over all I. So if we have to find its variance, one of the method is make another column which is xi minus mu square, and then write corresponding entries x1 minus mu square, x2 minus mu square, and xn minus mu square, and simply multiply it with its probability and add them to find variance of this random variable. Now if you want, we can simplify this expression. So we can write this as this summation xi square into pxi minus
2 mu xi into pxi plus mu square into pxi. Now we can simplify this summation. We can write this summation over all I xi square into pxi minus 2 mu summation xi into pxi and plus mu square into this summation pxi. Now this is summation xi square into pxi minus 2. This summation xi into pxi is mu again, so it will be mu square and plus, now summation pxi is 1, so it will be this mu square. So another method to write variance of random variable is simply by taking this summation xi square into pxi and then minus mu square. So either we can calculate this variance using this formula where we'll add this term in the table xi minus mu square and then multiply it with pxi and then add them, or another way is rather than adding xi minus mu square, we simply add xi square, so it will be this x1 square, x2 square and xn square, and then we'll find summation xi square into pxi, and once we get this result, from this result we'll subtract mu square to get its variance. So these are the two methods to calculate variance of a random variable. Now we'll come back to our probability distributions to calculate their mean and variance. Now first we'll consider mean of this probability distribution. Now in this case we can write this mu or Ex as summation xi into pxi over all I. Now here value of x is 0, corresponding probability is 1 by 8, so it will be 0 into 1 by 8 plus, now this is 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 and plus 3 into 1 by 8, which is 12 by 8. So in this case, mean of random variable is 3 by 2. Now once we have this mean, we have to calculate its variance. Now we'll calculate its variance in two ways. Now here value of mu is 3 by 2, so we'll make this table x minus mu square. Now this is 0 minus 3 by 2 square, so it will be 9 by 4. 1 minus 3 by 2 is minus 1 by 2. Minus 1 by 2 square is 1 by 4. Now 2 minus 3 by 2 is 1 by 2. 1 by 2 square is again 1 by 4. And 3 minus 3 by 2 is 3 by 2. And 3 by 2 square is 9 by 4. So in this case, variance of x is x minus mu square into px. So it will be 9 by 4 into 1 by 8. So it will be 9 by 4 into 1 by 8 plus 1 by 4 into 3 by 8 plus 1 by 4 into 3 by 8 plus 9 by 4 into 1 by 8, and this is 24 upon 32, which is 3 by 4. So for this random variable x, mean is 3 by 2. So average or expected value of random variable in this random experiment is 3 by 2 and its variance is 3 by 4. And with variance, we can also calculate its standard deviation. Now we know that standard deviation is under root of variance x. Now we know that standard deviation is under root of variance. So in this case, the standard deviation of random variable x will be under root of 3 by 4 or simply root 3 by 2. We can calculate this variance using other formula, and for this other formula we take x square. So in this table, rather than taking this, we'll take simply x square,
Now here 0 square is 0, 1 square is 1, 2 square is 4 and 3 square is 9. So if we find summation xi square into pxi, it will be 0 into 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 4 into 3 by 8, 9 into 1 by 8. Now this value is 12 and 12, 24. So it will be 24 by 8, which is 3. Now once we have this value, we can write variance of x as sigma xi square into pxi minus mu square. Now this summation is 3 minus mu square is 9 by 4, which again is 3 by 4. So we'll get the same value. So we can use this method where we use x minus mu square, or we can use this method where we use x square. So if the value of mean is complicated, then it's better to use x square. And if mean is simple, then we can simply use x minus mu square. This is how we define a random variable. And for that random variable, we can create a probability distribution. And from the distribution, we can work out its mean, variance and standard deviation. Now we'll find mean and variance of random variable y. Now in this case, mu is 1 into 6 by 8 plus 3 into 2 by 8, and there will be 12 by 8, which is 3 by 2. Now for variance, we can use either one. So here I'll take this y square. So it will be this y square, and y square is 1 and 9. So if we calculate summation yi square into pyi, it will be 6 by 8 plus 18 by 8, which is 24 by 8, and 24 by 8 is 3. And in this case, variance of y is this summation yi square into pyi minus mu square, which is 3 minus mu square, and that is 9 by 4, and it will be 3 by 4. Now we'll find mean and variance for this second random experiment A2 for this random variable x. Now we'll draw its probability distribution. So it'll be this 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2. So this is x and this is px, and we'll also need one more column for variance. Now this sum, it can be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now sum is 2. This probability is 1 by 36 because sum is 2 if and only if both the numbers are 1. So this probability is 1 by 36. Now sum is 3. We'll have 3 with 1, 2 and 2, 1. So it will be 2 by 36. Now 4 is 1, 3, 2, 2 and 3, 1. So it will be 3 by 36. Now 5 will be 4 by 36. 6 will be 5 by 36. 7 will be 6 by 36. And 8 again will be 5 by 36. 9 is 4 by 36. 10 is 3 by 36. 11 is 2 by 36 and 12 is 1 by 36. Now once we have x and px, we can calculate its average value or its expected value. So mathematical expectation of x will be, we'll take this 1 by 36 common from each, and then we'll have 2 plus 6 plus 12
plus 20 plus 30 plus 42 plus 40 plus 36 plus 30 plus 22 and plus 12, which is 252 divided by 36, which is 7. So average value of this random variable x is 7. Now if we draw this probability distribution, it has values 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Value at 2 is 1 by 36 and 12 is 1 by 36. 3 is 2 by 36. 11 is 2 by 36. 4 is 3 by 36. Here also it is 3 by 36. 4 by 36. 4 by 36. This is 5 by 36. 5 by 36. And at 7 it is 6 by 36. So this distribution, it is symmetrical about this number 7. So its mean, it should be 7. So this value 7, it is expected as mean of this random variable. Now we'll find its variance. For this one we'll use x minus mu square, and mu in this case is 7. So we'll write x minus 7 square. Now 2 minus 7 is 5. So it will be this 5 square, 4 square, 3 square, 2 square, 1 square, 0, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and 5 square. Now once we have these two, we can directly write variance of this random variable x. Now in this case, variance of x will be, now again we'll take 1 by 36 common, and here this is 5 square into 1, 4 square into 2, 3 square into 3, 4 into 4, 5 into 1, plus 0, and again this is 1 into 5, 4 into 4, 9 into 3 and 5 square into 1. So all we have to do is we have to multiply it with 2. Now this is 1 by 36 into 105 into 2. Now this is 80. If we solve this value, it will be 5.83. So mean of random variable is 7 and its variance is 5.83. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, और उसका जो मीन है वो 1.05 है. तो सबसे पहले हमको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ये 1 है, तो अगर सबको ऐड कर देंगे तो 0.08 प्लस p प्लस 0.12 प्लस 0.16 प्लस q प्लस 0.22 ये 1 के बराबर होना चाहिए. तो यहां से हमको मिलेगा कि p प्लस q का जो वैल्यू है वो बराबर है 0.42 के, और ये है हमारा पहला इक्वेशन. अब दूसरा उसने दिया इसका मीन है 1.25. अब मीन क्या है? मीन है आपका सिग्मा xi इंटू pxi. तो सबको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.16 माइनस p, ये हो गया 0.16 प्लस 2q प्लस 0.66, और ये बराबर आपका 1.05 के. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस p प्लस 2q, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 0.39, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3q, और ये बराबर है 0.81. तो यहां से जो q का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका
0.27 और Q का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा P का वैल्यू 0.15। तो हमारे पास P और Q की वैल्यू आ गई। तो P है आपका 0.15 और Q है आपका 0.27। अभी कहते हैं इनका वेरिएंस निकालो। वेरिएंस हमको पता है कि वेरिएंस ऑफ x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये कितना है? ये हो जाएगा 4 इंटू 0.08, ये कितना? 1 इंटू 0.15, ये 0, ये 1 इंटू 0.16, ये 4 इंटू 0.27 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 0.22। अब ये वैल्यू आएगा आपका 3.69। अब ये मिल गया, ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसका जो वेरिएंस है ये हो जाएगा आपका 3.69 माइनस 1.05 होल स्क्वायर, जो कि है 2.5875। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वेरिएंस हो जाएगा 2.5875। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। Now the question is, a person throws 2 fair dice. He wins ₹15 for throwing a doublet, wins 12 when he throws a result in the sum of 9, and loses 6 for any other outcome of the throw. We need to find expected gain or loss of this person. So here we have 3 values for random variable. So either it will be plus 15 or plus 12, or it will be this minus 6. Now what are the probabilities? Now he'll get 15 when he throws a doublet, and this probability is 6/36. Now he'll get ₹12 if the sum is 9. So it'll be 9 if it is 3, 6, 4, 5, 5, 4 and 6, 3, which is 4/36, and all other cases it is minus 6. So it'll be this 10/36. 1 minus 10/36 is 26/36. Now expected value of x will be 15 into 3 plus 12 into 2 minus 6 into 13 whole divided by 18, which is minus 1/2. So the expected gain of this person is minus 1/2 loss. Now the question is, in a game, man wins 100 if he gets 5 or 6 on a throw of fair die, and loses 50 for getting any other number on the die. If he decides to throw the die either till he gets a 5 or a 6 or to a maximum of 3 throws, then his expected gain or loss in rupees is. Now probability of his winning is only if he gets 5 or 6. So this probability is 2/6, which is 1/3, and probability of him losing on any chances 2/3. Now this game continues if he gets P, or if it is QP, or if it is QQP, or if it is Q, Q and Q. Now in this case, value of a random variable will be, if he wins, it will be 100. So it will be this 100. Now there is a loss and a win. So it will be 100 minus 50. So it will be plus 50. Now 2 losses and 1 win. So value of x is 0. And then 3 losses will be minus 150. And their respective probabilities, they are 1/3. Now this is 2/9. This is 4/27, and this is 8/27. So expected value of this random variable x will be 100/3 plus 100/9 minus
1200 by 27. Now this is 900 by 27 plus 300 by 27 minus 1200 by 27, which is 0. So expected value is 0. No gain, no loss. Now here the question is, in a game of chance, each player throws 2 unbiased dice and scores the difference between the larger and smaller number which arise. 2 players compete and one or the other wins if and only if he scores at least 4 more than his opponent. Find the probability that neither player wins. Now, if we throw a pair of dice, then in that case, the difference that we can have between the 2 dice are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the possible differences between the 2 dice. And we can also find their respective probabilities. Now the difference is 0 when all the numbers are same. So in this case, it will be 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. So this probability will be 6 by 36. Now difference between the 2 numbers, it is 1. Now the difference is 1 if we have 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5, 6 and the reverse order. So we'll have 10. So it'll be simply 10 by 36. Now if the difference is 2, then we have 1, 3, 2, 4, 3, 5 and 4, 6, 2 times again. So it'll be 8 by 36. Difference of 3. So it'll be 1, 4, 2, 5 and 3, 6 into 2, which again is 6 by 36. Difference of 4. 1, 5, 2, 6 into 2. So that'll be 4 by 36. And difference of 5 will be simply 1, 6 and 6, 1. So that'll be 2 by 36. Now it says 2 players compete and one or the other wins if and only if he scores at least 4 or more points than his opponent. Find the probability that neither player wins. What we'll do is we'll find the probability that one of them actually wins the match. So the person is going to win if there is a margin of at least 4. So it can be either 0, 4, 0, 5 and 1, 5. So these are the only 3 cases possible. So this required probability will be 2 times, because it can be 0, 4 or 4, 0, 5, 0 or 0, 5 or 1, 5 and 5, 1. So 2 times into the probability of getting 0 and 4. There will be 6 by 36 into 4 by 36. So it will be 24 by 36 square plus 0, 5. 0, 5 will be 12 by 36 square and plus 1, 5 and 1, 5 will be 20 by 36 square. Now 24 plus 12 is 36. 36 square upon 36 is 1 by 36. So it will be 1 by 36 plus, and here will be 5 36 into 9. So we can write this as 2 by 36, and this is 9 plus 5, 14. 14 by 9. Now this is 2 and this is 7 and this is 9. So it will be simply 7 by 81. Now we need to find the probability that neither of them wins the match. So it will be this probability of W0, and that will be 1 minus 7 by 81, and that will be simply 74 by 81, and that is the answer to this question. Now question number 19 is, let x1, x2 and xn be independent and identically distributed with pxi equals 1 equals pxi equals minus 1 equals p, and then pxi equals 0 as 1 minus 2p for all I
from 1 to n. Then we have defined an as this probability x1, x2, xn is equal to 1. Second one is bn, which is x1, x2, xn as minus 1. And this third one where x1, x2 into xn, it is equal to 0. And we have taken it as cn. So for any random variable xi, there are three choices. Either it will be 1, 0 or minus 1. And their corresponding probabilities are p, 1 minus 2p and p. Now since it represents a binomial distribution, 1 minus 2p should be greater than 0. That is, value of p should be less than 1 by 2. Now first we'll talk about an. Now an is this probability x1, x2 into xn, and it is equal to 1. Now first we need to find in how many ways we can choose x1, x2 and xn such that its product is 1. Now one of the way of choosing it is when all the values they are 1. So if all the values they are 1, then we have only one case. Next one could be when n minus 2 values are 1 and then 2 values are minus 1. Then again their product will be 1. So from these n, we need to select 2 which will have the value minus 1. So it will be simply nc2. Next one will be all ones except 4 minus 1s. Here it will be simply nc4. It will continue till we have maximum number of minus 1s possible. Now since all these distributions they are independent, then we know that in any scenario px1 x2 into xn will be px1 into px2 into pxn. It will be simply p into p into p n times, because for plus 1 this probability is p and minus 1 also this probability is p. For each of these conditions this probability will be p into p into p n times, and that should be p to the power n. So now we can write an. So this an will be, now this first one it is nc0 p to the power n. Second one will be nc2 p to the power n, nc4 p to the power n. So we'll get this condition as nc0 plus nc2 plus nc4 into p to the power n. Now we know that the value of this binomial series is 2 to the power n minus 1. So it will be 2 to the power of n minus 1 into p to the power n. So it will be 1 by 2 into 2p to the power n. Now we'll take this limit n tends to infinite an will be 1 by 2 and then 2p to the power n. Now 2p is less than 1. So if 2p is less than 1, then 2p to the power infinite will be simply 0. So value of an, it tends to 0. Now in the same way, we can prove the result for bn. So for bn, we'll start with minus 1, and then we'll replace minus 1s with plus 1s. So we'll again end up getting the same expression. So from symmetry, we can say this bn tends to 0. So an tends to 0 and bn tends to 0. Now we know that either this product will be plus 1 or this product will be minus 1 or this product will be 0. That means sum of an plus bn plus cn will be 1. Now limiting value of an and bn, it is already 0. So from here we can say limiting value of cn will then be 1. So answer to this question will be an tends to 0, bn tends to 0 and cn tends to 1, and that's your option number D. Now the question is, there are 4 boxes A1, A2, A3 and A4. Box AI has I cards and on each card a number is printed. The numbers are from 1 to I. A box is selected randomly. The probability of selection of box AI is I by 10 and then a card is drawn. Now let EI represent the event that a card with number I is drawn. Now first one is, we need to find this probability of E1. Now probability of E1 is that card with number 1 is drawn. Now this card, it can come from any box. So it will be this PAI and then probability of E1 upon AI for I varies from 1 to 4. So it will be this summation I varies from 1 to 4. Now probability of choosing AI is simply
I by 10, and probability of getting 1 from AI is simply 1 by I. So this probability is simply 1 by 10. So it will be 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10 4 times. So there will be 4 by 10, which is 2 by 5, option C. Now the second part is, if the number chosen is 2, then find the probability that it has come from A3. Now probability of choosing E2 will be this summation I varies from 1 to 4, probability of choosing AI into probability of choosing E2 upon AI. Now in the first box, there is only one card and which is 1. So we cannot get anything from this first box. So this first probability will be 0. So now we are left with this probability, that probability of A2, probability of E2 upon A2, probability of A3, probability of E2 upon A3, and probability of A4, probability of E2 upon A4. Now this is 2 by 10 into 1 by 2. This is 3 by 10 into 1 by 3. And this is 4 by 10 into 1 by 4. So this probability is 3 by 10. Now we need to find this probability that if the card is E2, it has come from this third box. So we'll take this case in the numerator. So it will be this 1 by 10 divided by 3 by 10, which is 1 by 3, and that's your option B. Now the next one is find the expectation of number on the card. Now number on the card, it could be either 1 or 2 or 3 or 4 and their corresponding probabilities. Now if the number is 1, this probability is 2 by 5 or simply 4 by 10. Now for E2, it is 3 by 10. Now for this number to be 3, it will be 2 by 10. And for 4, it will be simply 1 by 10. Now if we have to find mean of random variable Ex, which is mu, it will be this 4 by 10 plus 6 by 10 plus 6 by 10 plus 4 by 10, which is 2. So the expected value of the number on the cards is 2, and that's your option A. जब हम expectations की बात करते हैं तो कुछ theorems हैं जो हमको पता रहना चाहिए. तो हमको पता है expectation of AX ये होता है A into expectation of X. दूसरा है अगर हम बोले expectation of AX plus B ये होता है A into expectation of X plus B. तीसरा है कि expectation of X plus Y ये होता है expectation of X plus expectation of Y. इसको बोलते हैं ये है linearity of expectation. तो इस चीज को अगर जनरलाइज कर दें तो expectation of x1 plus x2 plus xn. तो सपोज हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 plus x2 अप टू xn ये बराबर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 से लेके एक्सपेक्टेशन ऑफ xn के. अब जो आपका चौथा थ्योरम है वो है अगर आपके रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं. तो अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई ये बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y के. और क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y,
तो इनका जो कोवेरियंस है वो आपका 0 के बराबर आएगा। और इस चीज को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर x1, x2 और xn ये सब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 इंटू xn ये बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। तो ये आपके थ्योरम्स हैं जो आपको एक्सपेक्टेशंस पे हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहता है एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका एक्सपेक्टेशन 5.6 है और जिसका वेरिएंस 3.7 है। अभी कहता है कि ये एक्सपेक्टेशन निकालिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब वेरिएंस ऑफ x कितना? वेरिएंस ऑफ x होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस और ये कितना 5.6 स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 3.7 प्लस 5.6 स्क्वायर जो कि है आपका 35.06। अब ये हमको निकालना है तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन लीनियरिटी फॉलो करता है तो ये EX स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये बराबर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 6। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल लिया तो ये 35.06 है। 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमको दिया है 5.6 और 6 का एक्सपेक्टेशन कितना 6 इंटू समेशन पी एक्स है जो कि 1 होगा तो ये आपका 6 आएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 13.06। तो लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन से ये सब आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको होता है वेरिएंस। क्या होता है? वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू x। अब एक्सपेक्टेशन लीनियरिटी को फॉलो करता है तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस अब कांस्टेंट बाहर आता है तो 2 म्यू बाहर आ जाएगा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट तो ये म्यू स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2 म्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है? ये म्यू ही है तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर माइनस म्यू है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएंस के लिए दूसरा फॉर्मूला जो क्या आता है लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन से। अब एक चीज जो हमने स्टैटिस्टिक्स में किया था वो ये था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस is minimum about mean। तो डिविएशंस के स्क्वायर्स का सम मीन के अबाउट मिनिमम होता है और वहां पे हमने प्रूव किया था इसको कैलकुलस से। अब सेम चीज हम यहां पे प्रूव करेंगे एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो जैसे हमको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए स्क्वायर जहां पे a को एक नंबर है। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस ए होल स्क्वायर। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू माइनस ए होल स्क्वायर और ये जो 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस ए। अब ये है आपका वेरिएंस ऑफ x प्लस अब कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वो कांस्टेंट तो ये हो जाएगा म्यू माइनस ए होल स्क्वायर और यहां पे अगर देखें तो ये 2 म्यू माइनस ए तो कांस्टेंट है
और लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस और एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू ही रहेगा। तो ई एक्स माइनस म्यू कितना 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ये बराबर है आपका वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस म्यू माइनस ए होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि इसका अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, और ये स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगा, ये तब आएगा जब ए का वैल्यू आपका म्यू के बराबर है। तो इसका मतलब कि स्क्वायर डिविएशंस का सम मिनिमम तब होगा जब हम उसको मीन के अबाउट लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए आया वो आपका मीन के बराबर आया। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव करो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, जहां पे म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है और सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है, यानी सिग्मा स्क्वायर बेसिकली ई एक्स माइनस म्यू स्क्वायर है। तो अगर हम ई एक्स स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई माइनस म्यू प्लस म्यू होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स आई माइनस म्यू इंटू पी एक्स आई। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये जाए समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई प्लस यहां पे म्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये जो म्यू स्क्वायर इंटू समेशन पी एक्स आई, और यहां पे हम लिख सकते हैं 2 म्यू समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई माइनस 2 म्यू स्क्वायर इंटू समेशन पी एक्स आई। अब ये तो क्या है, ये तो उसका वेरिएंस है, तो ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर प्लस, अब समेशन पी एक्स आई 1 है तो ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू। अब हमें पता है कि जो म्यू है वो है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, तो ये हो जाएगा प्लस 2 म्यू स्क्वायर, और यहां पे समेशन पी एक्स आई 1 है, ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आपका सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और ये है आपका आंसर। अब वेरिएंस के कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो हमको पहले ही पता है कि वेरिएंस ऑफ ए इंटू एक्स बराबर है ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स के, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स के। तो ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके स्केल पे डिपेंड करता है। फिर हमको पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई ये बराबर है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। इसमें एक रिजल्ट तब आता है कि अगर x और y आपके इंडिपेंडेंट है। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन वेरिएंस ऑफ x प्लस y ये हो जाएगा अपना वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ x माइनस y भी हो जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो वो केस में ये जो आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है ये 0 आता है। तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये बराबर है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, और इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई बराबर है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर के, सिर्फ तब जब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है। अब यहां पे हम 2 फॉर्मूलेस प्रूव करेंगे। पहला फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है आपका वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई
प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और दूसरा है वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये होता है आपका वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब इनको प्रूव कैसे करते हैं? तो जैसे पहला अगर ले लें तो हमारे पास दिया है, हमें निकालना है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली वेरियंस क्या है? वेरियंस है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहां पे हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन से। यहां पे भी लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन यूज करते हैं, तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेना है, तो हम लिख सकते हैं ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से ये दोनों को साथ ले लेते हैं, तो ये जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये जाए 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब ये क्या है? ये है आपका वेरियंस ऑफ एक्स, और ये हो गया आपका वेरियंस ऑफ वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई, और प्लस 2, और ये है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब ये एक्सप्रेशन हमको कोवेरियंस के टर्म्स में चाहिए। अब कोवेरियंस क्या है ये हमें पता है। अब कोवेरियंस है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई। तो इसको लिख सकते हैं ई एक्स वाई माइनस एक्स इंटू ई वाई माइनस वाई इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू ई वाई। अब ये हो जाएगा आपका ई एक्स वाई, और यहां पे इसको हम लिख सकते हैं, ये है ई एक्स इंटू ई वाई, और ये हो जाएगा ई वाई इंटू ई एक्स और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स इंटू ई वाई। अब ये है ई एक्स वाई। अब ई वाई बेसिकली मीन है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू ई वाई, ये भी हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू ई वाई, और एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट है वो कांस्टेंट, तो ये भी हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू ई वाई। तो ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये बराबर है आपका ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई के, जो कि हमें चाहिए था। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सीधे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई से। तो यहां से हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया कि वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जो कि हमको प्रूव करना था। अगर एक्स माइनस वाई की बात करें तो यहां पे क्या चेंज आएगा? सिर्फ फॉर्मूले में यहां पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहां पे, तो यहां माइनस 2xy, और यहां पे ई एक्स माइनस ई वाई, बाकी सब सेम रहेगा, यहां माइनस और यहां प्लस। तो बेसिकली ये फॉर्मूले में यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, तो यहां पे सब कुछ सेम रह के -2 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आएगा। तो वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई
-2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब इसमें हमको एक चीज पता है कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई ये बराबर हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर है तो इसका मतलब उसका जो कोवेरियंस है वो 0 हो जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो अगर आपके एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो वो केस में आपका वेरिएंस लीनियरिटी को फॉलो करेगा। तो अगर एक्स और वाई डिपेंडेंट है तो हम लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई ये बराबर होगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई और वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई होगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि दोनों ही केस में ये जो कोवेरियंस है उसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। वेरिएंस लीनियरिटी को फॉलो नहीं करता है, लेकिन अगर आपके रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो वो केस में वो लीनियरिटी को फॉलो जरूर करेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सम ऑफ 4 इंडिपेंडेंट डाइस। अब हमारे पास 4 डाइस हैं, मान लेते हैं कि सब पे जो नंबर्स आते हैं वो हैं x1, x2, x3 और x4। अब हमको पता है कि लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो आएगा वो आएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x4। अब चारों पे जो नंबर्स आते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, तो बेसिकली जो चारों रैंडम वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 और x4 ये आपके इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसमें से अगर हम किसी भी एक रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका समेशन स्मॉल xi इंटू pxi। प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर को आने का 1/6 और नंबर्स क्या क्या आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। तो ये n प्लस 1/2 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आएगा आपका 3.5। तो जब हम 4 डाइस को रोल करेंगे तो उनके सम का जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो आएगा आपका ex1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ये वैल्यू के 3.5 जो कि आपका 14। तो इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो है आपका 14। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, सपोज वो पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रोल्स। तो जैसे हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। अब हमको पता है ये चारों रैंडम वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x4। अब क्योंकि चारों एक्सपेक्टेशंस बराबर हैं तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 3.5 टू द पावर 4। अभी कहता है इनके सम ऑफ रोल्स का वेरिएंस भी निकालिए, तो हमको इनके सम ऑफ रोल्स का वेरिएंस निकालना है। तो हमको ये भी पता है अगर आपके रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये बराबर होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4। अब ये केस में चारों डाइस के लिए सेम सिचुएशन है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ कोई भी एक पर्टिकुलर xi। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी एक रैंडम वेरिएबल के लिए उसका वेरिएंस निकालेंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन xi माइनस 3.5 होल स्क्वायर इंटू pxi, जहां पे xi का वैल्यू जाता है 1 से लेके 6 तक और pxi सब केस में कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/6। तो ये जगह 1/6, अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना 2.5 स्क्वायर फिर 1.5 स्क्वायर फिर 0.5 स्क्वायर फिर 0.5 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर और
2.5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 17.5 डिवाइड बाई 6 जो कि है नियरली 2.92। तो ये जो सम ऑफ रोल्स का वेरिएंस आएगा वो आएगा आपका 4 टाइम्स 2.92 जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 11.67। तो लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन से इजीली हमने इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों निकाल लिए। अब कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में हम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, तो हम स्टैंडर्डाइज वेरिएबल यूज करते हैं। तो जैसे अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल x है, जिसका मीन म्यू है और जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा है, तो हम एक स्टैंडर्ड वेरिएबल z को डिफाइन करते हैं जो बराबर है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के। अब इस तरह से जब हमने x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा z को डिफाइन किया है, तो इसका फायदा क्या है? तो अगर हम वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, तो हम अगर उसका मीन निकालें तो उसका जो मीन आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो ये 1 अपॉन सिग्मा और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू। अब ये है 1 अपॉन सिग्मा और ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू। अब ये है 1 अपॉन सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ x और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, बेसिकली वो म्यू है, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब हमने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो इसका मतलब कि हमने मीन को 0 पे रीसेट कर दिया। और अगर हम इसके वेरिएंस की बात करें तो इसका जो वेरिएंस आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ z माइनस उसका मीन 0 होल स्क्वायर जो कि है बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, ये तो उसका वेरिएंस हो गया, तो ये हो गया आपका 1 के बराबर। तो हमने क्या किया, जब हमने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो उसका मीन 0 कर दिया और उसका जो वेरिएंस है वो 1 के बराबर कर दिया। तो अब z के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसमें मीन 0 रहेगा और वेरिएंस 1 रहेगा, तो इसलिए हम इस z को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बोलते हैं। Now this is one very interesting problem in statistical probability, and the question is, if we have n tickets which are numbered from 1 to n, then we draw out m tickets. We have to find variance of sum of numbers on these tickets. So we have n tickets which are numbered from 1 to n, and from these n tickets we have drawn m tickets where obviously m is less than or equal to n. Now we need to find variance of sum of numbers on these tickets. Now way to go about it is, we'll assume that let xi be the number on ith draw, and here we are selecting these numbers without replacement. Now we need to find variance of some of these numbers on tickets. So what we'll do is we'll define a random variable x, which actually is sum of x1 plus x2 plus xn. So we'll simply write this summation I varies from 1 to m xn, and we have to find variance of this random variable x. Now if we talk about this xith draw, what could be the number on this draw? It could be any number from 1 to n. So if we write its uniform probability distribution, we can write probability that this xi, it is equal to k, it will be equal to 1 by n if k is from 1 to n and it is 0 otherwise. So the probability that on the ith draw number is k, it is 1 by n. Now if we find expectation of xi, then expectation of xi will be this summation. Now k into p xi equals to k.
where k varies from 1 to n. Now this probability is 1 by n, so it will be this 1 by n, and then this summation k varies from 1 to n, summation k, which is n plus 1 by 2. So it will be n plus 1 by 2n. So expectation that ith draw is xi, it is n plus 1 by 2. Now for this random variable x, we can find its expectation using linearity of expectation. So we can write expectation of x as expectation of x1 plus x2 plus xn, which we can also write summation expectation of xi, where I varies from 1 to m. Now expectation of xi is n plus 1 by 2, so it will be simply m into n plus 1 by 2, and that's our first result. Now we have to find variance of this x. Now we know that variance of x is expectation of x square minus expectation x whole square. So here we have to find this term expectation of x square. So what we are looking at is expectation of x square. And what is x square? X square is this x1 plus x2 plus xn into x1 plus x2 plus xn. So basically we can also write this as, this is summation I varies from 1 to m, summation j varies from 1 to m, expectation of xi into xj, basically expectation of this product. We'll get this as x1 square plus x2 square plus xm square, and then 2 times then all these products xi into xj, where I is less than j, where j is less than equal to m, and I is less than equal to 1. So we can write this as this summation I varies from 1 to m, and then we'll have x1 square, x2 square, and xm square. So it will be this expectation of xi square plus 2 times this double summation I is less than j is less than equal to m, expectation of xi into xj. Now in order to calculate ex square, we have to find these two expressions. Now the first one is simple. If we look at this first one, which is summation I varies from 1 to m expectation of xi square. For this, we'll first calculate expectation of xi square. Now it will be this summation I varies from 1 to n, and then what are the possible values of xi square? 1 square, 2 square, up to n square. So it will be this I square, and probability of getting 1 square, 2 square, and n square, it is 1 by n each. So it will be this 1 by n. So we can write this as 1 by n into n plus 1, 2n plus 1 by 6. Now this n and n will cancel, so it will be this n plus 1, 2n plus 1 by 6. So if we write this, we write this as this summation I varies from 1 to m, n plus 1, 2n plus 1 by 6. Now essentially this is independent of I, so we can simply write this as n plus 1, 2n plus 1 whole divided by 6. So that's your expectation of xi square. Now we have to calculate this 2 times double summation expectation of xi into xj. So for the second term, we'll find 2 times this summation. One is less than equal to I is less than j,
it is less than equal to m e xi into xj. Now the obvious question is, how do we calculate this? And for that, first we look into expectation of xi into xj, which is expectation of product of numbers which occurred at ith and jth position. Now, if we look at ith position and jth position, how many products can be formed if I is unequal to j? Now we have total n numbers, and from these n numbers we can choose two numbers in NC two ways. So the total number of combinations which are possible for xi into xj is NC2, and since each product is equally likely to come, this required probability xi equals some number a and xj equals some number b, it is equal to 1 upon NC2, where a and b, they belong to this set from 1 to up to n, and additional condition is this a is unequal to b. Now if we look at expectation of xi into xj, it will simply be this product AB and then this probability NC2, where both A and B, they lie between 1 and n, and where A is unequal to B. So for the sake of simplicity, rather than changing the variables to A and B, we'll simply write this as this summation I and j, they lie between 1 and n, where I is unequal to j, and will be this I into j upon NC2. And also, how many such pairs will be there for this combination from 1 to n? So for these m numbers, total number of such combinations will be simply MC2. So we can simply write this as MC2 upon NC2 summation I and j varies from 1 to n, where I is unequal to j, I into j. Now we need to find this summation. Now we can simplify this as m minus 1 upon n minus 1, and here it is product of all the numbers from 1 to n except when they're equal. So if we look at this product, 1 plus 2 plus 3 up to n into 1 plus 2 plus 3 up to n, from this we have removed all those numbers where a number is multiplied by itself. So what we'll do is we can actually write this as this summation ij, where ij lying between 1 and n minus summation I square. So from this we have taken out all those cases where I is equal to j. So it will be this summation I square, where I varies from 1 to n. I into j is basically 1 plus 2 plus 3 up to n into 1 plus 2 plus 3 up to n. We can simply write this as n minus 1 upon n minus 1 into, and this is this expression which is n plus 1 by 2 whole square minus this value which is n plus 1 2n plus 1 divided by 6. So here we can take n plus 1 by 2 common. So we can write n minus 1, n will cancel, will be n minus 1, n plus 1, and we'll have n plus 1, we'll also have this 2 here, by 2 minus 2n plus 1 divided by 3, which we can also write as
n minus 1 n plus 1 upon 12 n minus 1, and here will be 3n square minus n minus 2, and that's our third result. We can actually factorize this. So this is 3n square minus 3n plus 2n minus 2. So there will be 3n plus 2 into n minus 1. Now this n minus 1 and n minus 1 will cancel. So basically we can write this as n minus 1 n plus 1 into 3n plus 2 whole divided by 12. So now we have our three results. So this is our third result, which is this 2 times double summation exi xj. Then we have this exi square, and we have our ex. Now we can find this required variance, which is sum of numbers in first m tickets, and that will be ex square minus ex whole square. Now this ex square is basically second result plus third result, and this ex is first result. So now we can write this as ex square is n plus 1 to n plus 1 divided by 6 plus, now for this second result we have n minus 1 n plus 1 3n plus 2 whole divided by 12 and minus, and then ex is m into n plus 1 by 2 whole square. Now from this we can take m and n plus 1 common, and we can also take this 2 common, so we can write m into n plus 1 by 2 will be 2n plus 1 by 3. Here we'll have m minus 1 into 3n plus 2 by 6, and then we'll have m into n plus 1 divided by 2. Now we take this LCM, then we can write m into n plus 1 by 12, and here will be 4n plus 2 plus 3mn minus 3n plus 2n minus 2, and then here we'll have minus 3mn minus 3n. Now this 3mn will cancel, this plus 2 will also cancel, so here we'll have 4n minus 3n, n minus m, so that will be simply m into n plus 1 into n minus n whole divided by 12. So that's the required variance. Now once you have learned this, you'll be able to solve many more questions, such as find the variance of sum of k randomly drawn numbers from 1 to n, or in a box there are n balls numbered from 1 to n, and we have selected m balls. We have to find variance of sum of numbers on these m balls. So all such questions, they'll be solved in the same way, and that's the answer to this question. Now there'll be situations where this random variable, it may have continuous values. So for continuous random variable, say x, we define this function, say fx, from r to 0 to infinite, and we call this function fx as probability density function, and this fx will be probability density function if this integral from minus infinite to plus infinite fx dx, it is equal to 1. So for the continuous random variables, we are defining a function which is called as probability density function, and here value of fx
it must be greater than or equal to 0. Now for probability density function, the probability that random variable x lies between a and b, it is given by this integral from a to b fx dx. So this probability will be given by this area under the curve from x equal to a to x equals b. Now for continuous random variables, we can define its mean mu or ex as this integral from minus infinite to plus infinite x into fx dx, and its variance, it will be this integral from minus infinite to plus infinite x minus mu square into fx dx. So we can define probability distributions not just for discrete random variables, we can define them for continuous random variables also. Now let us take up an example. Say for example, it says we are given a continuous random variable x, which is defined by this probability density function fx, which is kx cubed when x lies between 0 and 1 and it is 0 otherwise. Now here the question is, find the value of k, mean of probability distribution and variance of probability distribution. Now first thing is, if this is probability distribution, then this integral from minus infinite to plus infinite fx dx, it must be equal to 1. Now this definition is 0 for all of the interval. So if we integrate this function, this integral will be from 0 to 1. Now fx dx is kx cubed dx and it is equal to 1. So here we'll get this k and it is x to the power 4 upon 4 from 0 to 1, it is 1. So value of k, it must be 4. So if this is probability distribution, then value of k in this case is 4. So now we have value of k. Now with this value of k, we can find its mean. Mean of this probability distribution, it will be this integral from minus infinite to plus infinite x fx dx. Now this integral will be 0 except for the region between 0 and 1. So it will be this integral from 0 to 1 x, and fx in this case is 4x cubed. So it will be 4 into this integral from 0 to 1 x to the power 4 dx, and it will be equal to 4 into x to the power 5 upon 5 from 0 to 1. So its mean will be simply 4 by 5. Now we'll calculate its variance. Its variance will be this integral from minus infinite to plus infinite x minus mu, and mu in this case is 4 by 5. So it will be x minus 4 by 5 whole square into fx dx. So again this integral will be from 0 to 1 and then x minus 4 by 5 square, and fx is 4x cubed dx. So it will be this integral from 0 to 1, and this is x square plus 16 by 25 minus 8x by 5, and we'll take this 4 common and it will be this x cubed dx, or we can write this 4 into this integral from 0 to 1, and this is x to the power 5 plus 16 upon 25 x cubed minus 8 by 5 x to the power 4 into dx. Now this value will be x to the power 6 upon 6 plus 16 upon 25 x to the power 4 upon 4 minus 8 by 5 x to the power 5 upon 5 from 0 to 1, which is 4 into 1 by 6 plus 4 by 25
minus 8 by 25, which is 4 into 1 by 6 minus 4 by 25. So this is 4 and this is 25. 25 minus 24 is 1, and this is 6 into 25. This is 3 and 2. So its variance is 2 by 75. And another method to calculate variance for the same question is, we can write this variance of x as this integral from minus infinite to plus infinite x square fx dx minus mu square. So it will be this integral. Now again fx is defined between 0 and 1. So it will be this integral from 0 to 1 x square into 4x cube dx minus and mu square. And mu square in this case is 4 by 5 square. Now this is 4 and it is x to the power 5. X to the power 5 is x to the power 6 upon 6 from 0 to 1 minus 16 upon 25. So this value is 2 by 3 minus 16 upon 25. Now this is 50. 50 minus 48 is 2, and here this is 75. So again we'll get this answer as 2 by 75. So variance of this function is 2 by 75. अब ये क्वेश्चन में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x दिया है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें कि आप a का वैल्यू निकालो। अब हमको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वो आपका 1 होना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट fx dx ये आपका 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होता है 0 पे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। माइनस इनफाइनाइट से 0 dx प्लस 0 से इनफाइनाइट a इंटू e टू द पावर माइनस 2x dx ये है 1 के बराबर। तो ये इंटीग्रल हो गया 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो a e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 और ये जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक 1 के बराबर। तो ये है माइनस a बाई 2। अब e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और e टू द पावर 0 1। तो यहां से जो आपका a का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 2 के बराबर। तो जो a है वो है आपका 2 और ये है आपका पहला पार्ट। तो यहाँ पे ये जो a है वो है आपका 2। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा है वो है कि आप इसका एक्सपेक्टेशन बताइए। अब हमको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो है आपका इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x fx इंटू dx। अब माइनस इनफाइनाइट से 0 में ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ये है आपका 0 से इनफाइनाइट 2x इंटू e टू द पावर माइनस 2x dx। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे बाई पार्ट से, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका 2x और ये है e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 और यहाँ माइनस 0 से इनफाइनाइट। अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 और ये e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 इंटू dx। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। अब जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होगा और 0 पुट करेंगे तो x 0 होगा। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx। तो ये आपका माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस 2x 0 से इनफाइनाइट तक। अब ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका एक्सपेक्टेशन है आपका 1 बाई 2। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि आप इसका वेरिएंस निकालिए, फाइंड वेरिएंस ऑफ x। अब हमको पता है कि वेरिएंस ऑफ x जो है वो है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो हमारे पास 1 बाई 2 है, तो हमको सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब 0 से पहले ये 0 है तो ये क्लियरली हो जाएगा आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक एक्स स्क्वायर इंटू 2 e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx।
अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो ये हम लिख सकते हैं कि e(x²) ये बराबर है 2x² और ये हो जाएगा e⁻²x/-2 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक और -0 से इन्फाइनाइट तक। अब ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा e⁻²x -2 इंटू dx। अब यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे e⁻∞0 और 0 पुट करेंगे तो x² 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है, तो ये हो जाएगा e⁻x² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिट 2x e⁻⁻2x dx। अब ये तो वही इंटीग्रल हो गया जो हमने सॉल्व किया है, तो ये कितना है, ये है आपका 1/2। तो यहाँ पे हमें ex² मिल गया, ex² का वैल्यू कितना, ये है 1/2 माइनस ex², तो ये कितना 1/2², तो ये 1/2 माइनस 1/4 कितना 1/4। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका वेरिएंस जो आएगा वो आएगा आपका 1/4। और अगर इसका स्टैंडर्ड डिवीजन पूछते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कितना 1/2।